अस्सलाम वालेकुम, दिस इज नईम खियानी फ्रॉम द आर्ट ऑफ इन्वेस्टिंग। जब आप ये प्रोग्राम देख रहे होंगे उस वक्त ईद का एक वीक गुजर चुका होगा। सो बिलेटेड ईद मुबारक टू ऑल ऑफ यू एंड योर फैमिली फ्रॉम टोरंटो 360 टीवी एंड द आर्ट ऑफ इन्वेस्टिंग विद नईम खियानी। पिछले पूरा महीने क्योंकि रमज़ान में हमने थोड़ा ब्रेक लिया था, देयर आर लॉट ऑफ एक्टिविटीज़ बीन गोइंग ऑन ड्यूरिंग द मंथ ऑफ रमज़ान, लेकिन जो इन्वेस्टिंग की जो दुनिया है, जो इन्वेस्टिंग की जो जर्नी है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रही थ्रू आउट द मंथ। आपने काफ़ी सारी चीज़ें सुनी होंगी फ्रॉम ग्लोबल पर्सपेक्टिव, काफ़ी चीज़ें चेंज हुई हैं, ग्लोबल इम्पैक्ट काफ़ी पड़ा है टोरंटो स्टॉक एक्सचेंज और न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पे, और फ्रॉम सेक्टर टू सेक्टर देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स गेट्स वेरीड। फाइनेंस सेक्टर दे गॉट इनटू, क्योंकि इंटरेस्ट रेट जो है वो कट नहीं गया है ऊपर कनाडा में, इट रिमेन्स एज इज, बट यूएस में चेंज हुआ है। ऑन द अदर साइड ऑयल एंड गैस, हम सबको पता है इस वक्त क्या हालात चल रहे हैं ओवरऑल मार्केट के और ग्लोबल मार्केट के, वेयर एग्जैक्टली द ऑयल इज स्टैंडिंग, हम थोड़ी सी बात करेंगे उसके ऊपर। एनर्जी सेक्टर अगेन दैट टेक्स द प्रेसिडेंस राइट नाउ एंड दे आर गोइंग इनटू द नेक्स्ट डायरेक्शन। सिमिलरली टेक्नोलॉजी, एआई, इस वक्त जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें एआई में भी चेंज हो रही हैं, और विल डिस्कस समवेयर अराउंड इट फ्रॉम एआई पर्सपेक्टिव। एनवीडिया ने एक और लॉन्च किया है एआई का जो है वो सिक्योरिटी एंड सॉफ्टवेयर, वेयर एंटीवायरस फॉर एआई, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट दे हैव लॉन्च्ड एंड विल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट एज वेल। सो लेट्स स्टार्ट आवर प्रोग्राम। आज की जो मार्केट समरी हुई है, यूएस मार्केट हैज बीन हाईली हेडलाइन ड्रिवन दिस वीक। ये बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई है यूएस मार्केट में। अगर इस वीक का सिर्फ हम देखें तो ट्यूसडे को डाउ जोन्स वाज डाउन बाय 0.18%, S&P was 0.37 and Nasdaq was down by 0.84%. That happened on Tuesday. जब Wednesday आया, so that de-escalation improved, right? क्योंकि वो sentiment change हो गए, things were getting into a bit good direction in. Dow was up by 0.66%. ये मैं सिर्फ आपको कंपैरिजन बता रहा हूँ दिन बाय दिन कैसे चेंज होती हैं चीज़ें। Dow was up by 0.66, S&P was up by 0.54 and Nasdaq was up by 0.77, which means on Wednesday everything went up क्योंकि एक न्यूज़ आई थी कि things are good now. There was a deal between US and Iran and everything went well, which is why it happened and it reflects on the US market as well. So आप देख रहे हैं कि चीज़ें ऊपर जाना शुरू हो गई, लेकिन थर्सडे सेंटिमेंट चेंज हो गए, सेंटिमेंट रिवर्स हो गए। जो न्यूज़ हमारे पास जो वेडनेसडे को आई थी वो न्यूज़ जो है वो कंफर्म नहीं हो पाई, देन इट्स अनसर्टेनिटी की बेस पे इट गोज बैक, और डाउ S&P is down by 1.7%, डाउ डाउन by 1.0 एंड Nasdaq डाउन by 2.4%, और बहुत ही शार्पली डिक्लाइन हुए थे थर्सडे को। सो दैट्स एग्जैक्टली हाउ द मार्केट रिएक्ट्स जब आपकी ग्लोबल रिसेशन और ग्लोबल चेंजेस हो रही होती हैं, तो दैट्स इम्पैक्ट इनटू द मार्केट एज वेल। क्या हो रहा, तो ये तो एक हाई लेवल एनालिसिस हमारा आया मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से। हुआ क्या, व्हाट एग्जैक्टली ड्राइविंग द यूएस मार्केट दिस वीक? एक तो जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एंड द ईरान कॉन्फ्लिक्ट जो चल रहा था, राइट, उसकी वजह से मार्केट काफी शार्पली हाई और शार्पली लो पे जाना शुरू हो गई। जो यूएस क्रूड ऑयल है दैट वाज सेटल्ड एट $101.89 and 94.48, तो इस रेंज के बिटवीन क्रूड ऑयल जो है वो चल रहा था, जिसकी वजह से अगर आपको नोटिस करें तो इस वीक आपको गैस जो है वो महंगी नजर आई होगी, 1.7 1.8 तक गैस गई होगी। कैलगरी और दूसरे इलाकों में गैस वाज अप बाय 2 to 25 और इनफैक्ट 230 somewhere as well. So that's exactly what the range of oil of crude oil worked in. US import price भी ऊपर गई है 1.3% in February, which is the biggest monthly increase in the nearly 4 years. इन सारे चक्कर में क्योंकि import price आपकी ऊपर जाएगी, टैरिफ की वजह से जो इस वक्त ईरान और यूएस का जो इस वक्त मोमेंट चल रहा है, तो उसकी वजह से काफ़ी चीज़ें जो वो चेंज हुई, विच इज़ वाई देयर आर लॉट ऑफ प्राइसेस हाइक्ड अप। सेकेंड ड्राइवर जो हुआ है दैट इज इंटरेस्ट रेट सेंसिटिविटी, जिसकी वजह से जो इन्वेस्टर्स हैं दे स्टार्ट वरिंग अबाउट, क्योंकि मिडल ईस्ट की जो इंटरेस्ट रेट की मार्केट है they get infected as well, or investors think that inflation may re-accelerate because of the higher energy and import cost. Again, जब एक
इन्वेस्ट एक सेक्टर जो है वो इम्पैक्ट होता है एक जगह से, तो डेफिनेटली इंटरेस्ट रेट के ऊपर भी इम्पैक्ट आएगा, और जब इंटरेस्ट रेट के ऊपर इम्पैक्ट आएगा और वो बढ़ेगा तो देन द मनी विल गेट पुल्ड आउट फ्रॉम वन टू अनदर, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी हैड सीन. थर्ड ड्राइवर जो हुआ वो रैपिड सेंटिमेंट रोटेशन, एक दिन कुछ और सेंटिमेंट से, दूसरे दिन कुछ और सेंटिमेंट से, एंड दैट शोज अ हायर शोर इन्वेस्टर आर स्टिल वेटिंग टू बाय रिस्क व्हेन दे सी इवन partial chance of de-escalation. So de-escalation कभी हमें सुनने में मिल रहा था हो रही है, कभी हमें सुनने में आ रहा है नहीं हो रही. उस अफरा तफरी में that's exactly what we have seen, that investors were not confident to start investing in some of these sectors, and which is why we have seen that hike in the US market. कौन से बिग मूवर्स रहे जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है. एनर्जी स्टॉक बहुत ज़्यादा चेंज हुए, गेनिंग रफली अराउंड 3% दिस वीक. मेटा, फेसबुक, इंस्टाग्राम नियरली 7%. इसकी एक और रीज़न भी है. मेटा क्योंकि फेसबुक ने अपना नाम चेंज किया था कोई 2 साल पहले. दिस इज ड्यू टू मेटावर्स विच देव अनाउंस्ड एंड देव इंस्टॉल्ड. और मेटावर्स एक्चुअली इसको आप इस तरह से समझें जैसे कि जो हमारी फिजिकल दुनिया है, दैट्स एग्जैक्टली change that दुनिया into a digital world, and that's where metaverse started. बहुत सारे इन्वेस्टमेंट हुआ था मेटावर्स के ऊपर, लेकिन unfortunately they had to shut that project down, which is why we had seen some of the 7% decline there. Okay, on the other side, social media harmful to young people and new layoff were announced. ये US jury ने found किया है कि कंपनी सोशल मीडिया इज वेरी हार्मफुल टू यंग पीपल, और क्योंकि अब वो इंस्टाग्राम भी उनके हाथ में है, राइट. तो दिस इज ऑल एडिक्शन विच इज़ बीइंग गोइंग ऑन राइट नाउ, जिसकी वजह से हम ऑन द अदर साइड जो है वो स्पोर्ट्स के इवेंट्स कराते हैं ताकि बच्चे जो है और यूथ जो है वो इंगेज रहे वहाँ पे. लेकिन दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी आर सीइंग ऑलमोस्ट एवरीवेयर, दैट दिस इज वेरी हार्मफुल फॉर द यूथ. देयर IQ in fact is deteriorating at this point due to AI and all the tools have been there. So that is very harmful at this point, and which is why there is another reason that things are moving into a different direction. Semiconductor, AMD, Micron, Intel, they dropped over 4% as rising bond yields due to inflation failure, and that's exactly what happened. क्योंकि rising bond जो inflation interest rate ऊपर आया, rising जो bonds है उनकी price ऊपर गई, उनके interest rate जो return है वो ऊपर गए, so investor started getting money out from one sector to another. ARM Holding, a rare tech winner, soaring 13% after a massive revenue upgrade for its data center chip business. Data center is the way to go now. यही NVIDIA के president ने announce किया था आज से 3 महीने पहले that they are going into data centers and they will build up more, क्योंकि as AI getting progress, इस वक्त अगर आप AI पे काम कर रहे हैं और जो हमारे लोग इस वक्त काम कर रहे हैं AI पे, APIs are getting very expensive now. और एक API, एक ट्रांजैक्शन का रन या एक कमांड का रन it's eating up your API cost as well. मैं जरा डीप में जा रहा हूँ, but that's exactly what is happening, and due to which there are not that many data centers who can process all this information, and which is why we are seeing data centers are getting up. So अगर data centers में अगर आप invest करना चाहते हैं तो start looking into that. This is the right time to start getting into this. US market in detail, finally summary जो हम देखें, the weakest major area has been technology. हम अभी बात कर चुके हैं technology के point of view से. The pattern suggests that the investors are trimming higher multiple growth exposure first over while oil spikes and over the conflict. ये exactly हम अभी discuss कर चुके हैं. और US market का इस week का message है कि leadership is getting narrow and tactical, and due to which investors are not happy, right, throughout in that way, and they are taking the money out from there. गोल्ड भी इम्पैक्ट हुआ है, जैसे ही इंटरेस्ट रेट ऊपर आया, दैट्स अगेन गोल्ड मार्केट भी नीचे गई है काफी. हमने गोल्ड को प्रेडिक्ट किया था इट वुड गो अराउंड 5000, इट वेंट टिल 5000, इनफैक्ट इट वेंट टिल 5700, बट देन इट ड्रॉप्ड, एंड राइट नाउ गोल्ड इज अराउंड 4300 or so, and speculation is it may go down a bit. Keep an eye on it. If gold goes down around 4000 or 3900, that's the right time to jump in, because then it will go up like crazy. अच्छा जी, टोरंटो मार्केट के ऊपर बात करते हैं. is also volatile this week, लेकिन टोरंटो मार्केट इतनी ज्यादा चेंज नहीं हुई जितनी यूएस हुई है. After finishing last week with a steep 30.8% weekly drop,
इस वीक टोरंटो मार्केट ने रीबाउंड किया है 1.8% मंडे को, 0.2% ट्यूसडे को और 1.4% वेडनेसडे एंड 0.3% ऑन थर्सडे. सो दैट्स अ मार्केट रीबाउंड. और जो क्लोज हुआ है S&P एंड TSX कंपोजिट इंडेक्स, दैट वाज अराउंड 32,000 which marked a fourth straight day of gains. चारों दिन मार्केट ऊपर गई है, which is very good. अच्छा जी, क्या हुआ है? एक तो रिबाउंड मिला है मार्केट को, रिलीफ फ्रॉम लास्ट वीक. दूसरा, कमोडिटी लिंक सपोर्ट भी मिली है, एनर्जी ऊपर आया है, मटेरियल्स ऊपर आए हैं. एंड एनर्जी, इनफैक्ट व्हाट वी आर सीइंग राइट नाउ, इट क्लाइम्ड अप टू 92.35. ऑयल ने जब जंप किया तो डेफिनेटली एनर्जी सेक्टर वाज बूमिंग देयर एज वेल. On Wednesday, material sector got even stronger. They went up to 3.3% and also gains in gold and copper. On Thursday, energy added another 0.6%, लेकिन material was flat because of the weaker gold price जो हुई है आज जब हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड करा रहे हैं, और जिसकी वजह से मटेरियल में भी इम्पैक्ट आया और गोल्ड की प्राइस इस वक्त जो है वो कदरे डाउन जा रही है. और एज आई सेड, स्पेकुलेशन इज इट विल मे गो डाउन फर्दर एज वेल. Canadian market has also shown broader sector participation. अगर इसमें आप ये देखें तो वेडनेसडे को जो है वो ऑल मेजर सेक्टर टेक्निकली रिकॉर्ड किया है, अच्छे जो है वो प्रॉफिट दिए उन्होंने. थर्सडे को इंडस्ट्रियल, कंज्यूमर स्टेपल्स एंड कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी हेल्प एक्सटेंड द रैली, वो और बढ़े हैं. और जैसे जैसे हम अब आगे बढ़ेंगे, विल सी दीज सेक्टर्स आर गेटिंग मोर हाइप्ड अप. अच्छा जी, बिग मूवर्स कौन हुए इस वीक में? बोरेलेक्स, BLX, दे सर्ज एट अराउंड 11% following a massive $9 billion buyout offer, which is very good, right? So you can look into that stock. Energy heavyweights were Suncor, CNRL and Cenovus. So all traded higher at around 1% to 2%, and due to crude moving back towards $100. अगर क्रूड नीचे आएगा तो एनर्जी सेक्टर की जो है वो प्राइस भी नीचे आएगी, लेकिन अगर क्रूड वहीं रहा तो दिस इज द राइट टाइम टू लुक इनटू एंड कैप्चर द प्रॉफिट. बैरिक गोल्ड रोज नियर 3.3% लेट इन दिस वीक, लेकिन जैसे जैसे पीस स्टॉक्स लुक्स जो है वो होना शुरू हुई, इन्वेस्टर आर रोटेटिंग बैक टू गोल्ड एंड अदर्स, राइट? सो दैट्स एग्जैक्टली व्हाट द मनी इज मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर. Shopify, despite the broad software rally midweek, it remains volatile as customer spending in Canada begins to decelerate. अब ये हमारी इन्फ्लेशन की इस वक्त जो है वो मार्केट चल रही है कि इस वक्त लोगों के पास ज़्यादा पैसा नहीं है शॉप करने के लिए, ड्यू टू विच वी आर सीइंग डिक्लाइन इन द बाइंग पावर इन कैनेडा. कंपेरेटिव इनसाइट्स अगर हम देखें तो यूएस मार्केट हैज़ बीन मोर वल्नरेबल एंड ग्रोथ. जो स्टॉक यूएस मार्केट के रहे हैं, that goes in a different direction, but Canadian market has been trying to get to that level, but it will take time. Energy shares were giving out so much good profit out of it, and from the US perspective, tech sensitivity and macro fear got them. So ये इस वक्त US market का जो है इस वक्त major dilemma at this point चल रहा है, और due to which जो है वो लोग इस वक्त ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रहे right now. But if you wanted to get into this investment journey, look for energy, look for finance here in Canada, and these will give you enough profit for you to get into it. हम gold price check करेंगे quickly, and then we will end the program. इस वक्त जो gold share है market में, gold की price इस वक्त चल रही है जो ये stock मैं आपको बता रहा हूँ, that is 400. It went up to around way too much, but अभी इस वक्त जो है वो ये 400 पे है, 464. 500 तक गया था ये, अराउंड 490, लेकिन नाउ इट इज डिक्लाइनिंग. और ये जो इस वक्त स्टॉक है GLD, इसकी प्राइस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है गोल्ड की प्राइस से. अगर गोल्ड की प्राइस ऊपर जाएगी ये ऊपर जाएगा, अगर गोल्ड की प्राइस नीचे जाएगी तो ये भी नीचे जाएगा. अच्छा जी, नेक्स्ट हम बात करते हैं आई शेयर. दिस इज ETF फॉर गोल्ड. ये मैं आपको हर प्रोग्राम में दिखा रहा हूँ, आप ये ग्राफ चेक कर सकते हैं. ये एक दिन का ग्राफ है, लेकिन अगर मैं आपको 5 दिन का ग्राफ दिखाऊं, सो इट्स डूइंग गुड, क्योंकि इसमें सिर्फ गोल्ड नहीं है, इसमें गोल्ड का ETF है. देयर आर मल्टीपल कंपनीज हु आर मैनेजिंग गोल्ड, माइनिंग, सेलिंग, रिटेलिंग, माइनिंग एंड
manufacturing. So that's the combination of this. So and then you can see the difference. जहाँ पे सिर्फ gold से connected है, that is going down, but where you have other industries which are connected with gold, it is not that bad, right? So you can look into that. And ETF buy karna, if you look at this, their return was 84.73% over a year due to gold pricing, but this is a good one to jump in. So that's it. Yeah, this is pretty much it, folks. आज के लिए हमने काफ़ी चीज़ें cover की. Next week से इंशाल्लाह, क्योंकि there are a lot of momentum being happening on the AI side. I'll try to bring something up for you. मैं आपको कुछ डेमोज दिखाना चाह रहा हूँ ताकि आप जो है वो AI के ऊपर अगर काम नहीं कर रहे हैं तो you start working on it. There are different concepts which I will try to bring it up, agentic AI, predictive AI and all that. और उससे आपको थोड़ा सा फायदा इन सेंस में होगा कि you would know where to start and how to start. So I'll try to bring those information up. This is not investment, but this is investment in you. Because if you invest in you, you will get a longer way. So this is it. Thank you so very much. Inshallah, I'll see you in the next episode. Assalamu alaikum. Managing your own business can be a lot of work. A professional accountant always makes a difference. It's imperative that your accountant keeps your finances simple, accurate, and confidential. Audited? Need help? That's why we chose Scans Accountants. They make you feel at ease knowing you and your business are in good hands. Scans Accountants, team of professionals. अगर आपको दुबई या मिडिल ईस्ट नुमा जेवरात की तलाश है तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं. आज ही हमारे मिसिसागा रिचवे स्टोर तशरीफ लाइए. अल करम ज्वेलर्स. हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं. शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे. आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए. अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा. या फिर कॉल करें 905-828-0009. अल करम ज्वेलर्स. फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी. If you are looking for an honest, dependable, and trustworthy auto repair facility, consider Z Auto Center for your foreign and domestic vehicles. Our certified technicians have years of experience, special packages for Uber, Lyft, taxi, and driving school car safety inspection, winter, summer, and all-season tire packages available. Best selection of used cars for sale. We are family-owned and operated business located at 3670 St. Clair Avenue East, just east of Midland Avenue in Scarborough. Call us today at 416-462-3050. TCF ऐसी कई सीढ़ियां बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए सालों से लगा रहा है. इस रमजान आपके अतियात और ज़कात भी किसी बच्चे के लिए सीढ़ी बन सकते हैं. तो TCF का साथ दें और बदलें लाखों जिंदगियां. हुआ पूरा मन का सपना, मेरा भी अब घर है अपना. घर आपको अच्छा घर चाहिए. Then let Talha Bhatti serve you the best. 647-295-7861. Pre-construction projects, residential and commercial properties. Special packages for first-time home buyers. A member of dedicated real estate professional team. Talha Bhatti. 647-295-7861. घर आपको अच्छा घर चाहिए. Then let Talha Bhatti serve you the best. The law professionals at TM Law, providing professional services in the GTA in the areas of civil litigation, criminal defense, family matters, and real estate. Serving the community in English, Punjabi, Hindi, and Urdu. For more information, call Tahir Majid, barrister and solicitor at 647-838-4773, or you can visit tahirlaw.ca. हुआ पूरा मन का सपना, मेरा भी अब घर
let Talha Bhatti serve you the best. 647-295-7861. Reconstruction projects, residential and commercial properties. Special packages for first-time home buyers. A member of dedicated real estate professional team. Talha Bhatti. 647-295-7861. अगर आपको अच्छा घर चाहिए Then let Talha Bhatti serve you the best. A harsh but true reality is that clean drinking water is inaccessible to many people living in third world countries. With the support of our donors, Muslim Welfare Canada has been successful in providing clean water through the digging of water wells and the installation of hand pumps for people living in remote and desert regions. Donate a well for $2,500 or a hand pump for $800. Call 1-866-754-3111 or visit mwcanada.org. Welcome to Icon Event Space, where every occasion becomes unforgettable. From weddings and corporate gatherings to birthdays, anniversaries, conferences, and cultural festivals, Icon is designed to host it all seamlessly. With room for up to 1,200 guests, our venue blends flexibility, sophistication, and scale, all tailored to your vision. Great location with ample free parking. Convenience is always part of the experience. Savor our premium catering featuring South Asian, continental, and a world of international flavors, curated just for you. Call us today at 437-425-2500 or visit iconeventspace.com. अगर आपको दुबई या मिडल ईस्ट नुमा जेवरात की तलाश है तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिचवे स्टोर तशरीफ लाइए। अल करम ज्वेलर्स। हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए। अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा, या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी। इस सीढ़ी ने मुझे ये मौका दिया कि मैं अपनी बेटी के लिए तालीम का रास्ता चुन सकूं। TCF ऐसी कई सीढ़ियां बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए सालों से लगा रहा है। इस रमजान आपके अतियात और ज़कात भी किसी बच्चे के लिए सीढ़ी बन सकते हैं। तो TCF का साथ दें और बदलें लाखों जिंदगियां। राहत बेकर्स एंड स्वीट्स 60 साल से आपके हसीन लम्हों में शामिल, खुशियों से भरे मीठे जायके, नफासत और क्वालिटी में सबसे बेहतर, खालिस अज्जा से तैयार करदा मिठाई, केक्स, बिस्किट्स एंड स्नैक्स, वही ऑथेंटिक जायका और क्वालिटी। पाकिस्तान से अब आपके शहर मिसिसागा में, कुछ मीठा कुछ नमकीन। राहत बेकर्स, आज ही विजिट कीजिए 3920 Eglinton Avenue West, Unit 24, Mississauga. Call 905-820-1500 or visit rahatbakers.ca. Thinking of buying, selling, or investing in real estate, whether it be residential, commercial, or pre-construction, Arshad Bhatti and his team of professionals can help. We have guaranteed allocations in high-rise and low-rise pre-construction projects in and around the GTA. Call Arshad Bhatti at 416-300-5600. That's 416-300-5600 or register at arshadbhatti.com. रोशन मुस्तकबिल और अपनों का साथ जन्नत से कम नहीं। आप भी कनाडा को अपना घर बना सकते हैं और अपनों को पास बुला सकते हैं। एक्सपीरियंस्ड एंड रेगुलेटेड इमिग्रेशन कंसल्टेंट शहबाज अकबर के साथ, मास्टर ऑफ बिजनेस क्लास इमिग्रेशन, एक्सप्रेस एंट्री, स्किल क्लास इमिग्रेशन, रेफ्यूजी क्लेम्स एंड फैमिली स्पॉन्सरशिप्स। कॉल नाउ एट 416-855-9464. Green Star Immigration Solutions Canada. If you are looking for a reliable, professional, and affordable travel agency in your town, then your search is over. Global Travel and Tours is your personal travel partner. Our dedicated staff, always ready to make your trip hassle-free, memorable, and cost-effective. We will assist you with hotel reservations, the transportation, visa assistance, and travel insurance. Please give us a call right now at 1-877
275 3555.